Have a nice day and welcome to English Phonics। मैं कमिटमेंट तो कर गया हूँ कि मुझे तुम्हें इंग्लिश सिखाना है और प्रॉपर फोनिक्स के और प्रॉपर साउंड्स, हाउ द इंग्लिश पीपल, इंग्लिश पीपल, हाउ दे यूज द साउंड इन वेरियस वेज, इन फैंटास्टिकली। और जो अमेरिकन पीपल एक्शन बोलते हैं ना, जिस तरह बोलते हैं ना, बस वही तो सिखाना है। तो A to Z तक जाना है और मैं तुम्हें 24 to 26 वीडियोस दिखाने के से ठीक होगा। आराम से 2 वीडियोस में मैं तुम्हें फोनिक्स सिखा दूंगा, ठीक है। जैसे कि हम कहीं भी कौन सा वर्ड बोलेंगे ना, पूरा स्वीटनेस होगा या सॉफ्ट होगा और बेहतरीन होगा। और अगर हम फोनिक्स नहीं जानेंगे तो जितना भी इंग्लिश बोल दो उसमें कुछ अट्रैक्टिव नहीं होगा, कुछ मेस्मराइजिंग नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, जो सुनने को ना अच्छा नहीं लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट, ओके, लेट्स मूव फायर इन 2 वीडियोस। और पता है ना तुम्हें 60 डेज 60 डेज 2 मंथ्स में हमें इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे भी। एंड आई जस्ट बिलीव यस वी कैन। So this one is your English alphabet capital letter A, and this one is your small letter alphabet A, okay? And the A sounds like कैसा sound करता है? A कैसा sound होता है? A for apple, A for ant, okay? Then next we need to go to B, capital letter B, and this B sounds b, okay? 2 lips है ना, b, okay? B for baby, B for book. So B कैसा sound होता है? b. So B for baby, B for book, okay? C, capital C, and this one is a small letter C, English alphabet capital C, and this C sounds as what, you know? K नहीं, k. C sounds as k. Cat, C for camel, cat, k. C sounds कैसा होता है? K. And next let's read D, English alphabet D sounds as what? Duck, you know, बार बार बोल रहा हूँ, साउंड्स अच्छे से फॉलो कीजिए, ओके। सो दिस अल्फाबेट D और द लेटर D साउंड्स D for duck, D for deer, D for dog, D for deer, okay? D. नेक्स्ट E कैसा होता है? E कैसा साउंड होता है? कैपिटल लेटर अल्फाबेट कैपिटल लेटर E sounds like what? देख रहे हो ना, ये पूरा ऐसा होता है elephant. This one is your small letter elephant. Elephant. Egg. So E sounds as okay. The next letter in this alphabet capital letter F. This F sounds as सीटी मारते हो ना, fish. F sounded fish. F for fan, F for fish, F for fan. So F का sound होता है, okay. The next your G. Next letter English alphabet capital letter G, and this G sounds like g. Vibration देखियो ना, g. G for grabs, G for girl, okay? G for grabs, G for girl, okay? Next capital letter H, and this H, this one is your small letter H, and this H sounds like what? बाबा रामदेव बाबा देखते हो ना, H for hand, H for hand, H for hand. H sounded पता है? I sounds as India. I sound कैसा होता है? I for India, okay? India. And ink bird, I sounds as इसका बहुत सारा साउंड्स होता है, पर एक ही साउंड हम पढ़ेंगे फिलहाल, ओके? सो I sounds कैसा होता है? Then next your capital letter J, and this one is your lower letter J or small letter J, and this J sounds like J नहीं, J,
j j joker jacket colorful dresses joker का देखिए ना ये j for joker j for jacket j j j j sounds like ये j कैसा साउंड होता है j अगर ये नहीं ये आवाज नहीं सीखेंगे तो कैसे बोल पाएंगे अगर बोलना है तो अच्छे से बेहतरीन से बोलेंगे ओके सो दिस लास्ट वन योर k K is capital letter K, and this K sounds like what you know? K, 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 kite, kite, kangaroo, kangaroo, and kite. So K sounds कैसा होता है? K, k. Okay, just you crack out. और next video में हम सब complete करेंगे. Okay, just you guys.